sections, you've all studied something or the other, and we'll be just learning how to technically sketch those conic sections. Now, anybody who can just redefine what do we mean by conic sections? When you hear the term conic section, what idea does come to you? Conic section can be a conic part of a cylindrical part. No, 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 no. Not exactly this. Anything else? It has a vertex and a base. No. Anybody else? Hyperbola, parabola. They are examples of conic sections. What is a conic section? Ma'am, when a plane cuts a cone, then the sections are called conic section. When a plane cuts Cone. a cone, I mean a single cone or two No, cones? cone. Two cone. Two cones placed how? Placed on their vertices. Placed on their vertices. Now, when you say conic section, section means what? A part? Kiska? Cone ka? That's why we are calling it a conic section. So, and see, cone is a three-dimensional solid. ठीक है ना? Plane is also a three-dimensional solid. So when you take an intersection of three-dimensional solids, what do you get? A curve. What is the intersection of two planes? क्या आता है? Intersection. Line. It's a line. ठीक है? What is the intersection of a sphere and a plane? एक बॉल को बीच में से काट दो, क्या आएगा? Plane. कौन सा? एक स्फीयर को, एक बॉल को बीच में से काट रहे हो, प्लेन से, चक्कू से काट रहे हो. Circle. Circle. So that's a curve. Okay. Similarly, you take a hard-boiled egg, right? Now, if you have a hard-boiled egg, you cut it horizontally like this, or you cut it vertically. ऐसे pieces करो या ऐसे pieces करो. तो जब horizontally cut करोगे तो क्या क्या आता है? Oval. Ellipse. Horizontally. I'm talking of horizontal. Ma'am, parabola. हार्ड बॉइल्ड एग को इमेजिन करो, उबला हुआ अंडा है तुम्हारे पास. Ellipse. उसके Ma'am, ellipse और circle. मैं कह रही हूँ हॉरिजॉन्टली, मतलब अंडे को तुमने ऐसे रखा और उसके ऐसे ऐसे पीसेस कर रहे हो. हॉरिजॉन्टल. Circle. और अगर वर्टिकल करोगे तो अंडे को ऐसे रख के लंबे काटो. अब oval or ellipse, right? So what I mean to say is that if you have two three-dimensional solids with you and you take an intersection of them, you get a curve. So this is what when we say conic sections, basically, when we are writing, हम लिख ही रहे हैं ना, conic sections. Okay, so that means we are talking of sections. किसका? Cone का, but they're not just single cone. In fact, अब cone अगर मैं draw करने की कोशिश करूं तो I'll have something like this, right? Yes. Now you take an intersection of this with a plane. अब अगर इसका एक single cone का मैंने लिया यहाँ से ये, तो इस plane पे कुछ impression बनेगा ना? So you have an ice cream cone with you and you start cutting it into thin slices from here. एक एक plane से intersect कर रहे हो. तो उस plane पे जो आ रहा है, that is a curve, right? Similarly, if I place another cone here, I mean something like this with their vertices touching like this, and if I take a plane passing through this point, what do you get? Just a point.
Okay, you take a plane passing through, you just incline, you take the angle of inclination of these planes and you get a different curve. इसको थोड़े से angle पे incline कर दो इस plane of intersection को, right? So you get an something like this. Okay, so Ellipse. ellipse. So what we do is there are certain specific curves that we get out of the intersection of a cone and a plane. So such curves are called as conic sections. Like you gave an example, we have a parabola, circle to hai hai. We have a parabola, then we have ellipse, then we have hyperbolas, even circle. So they are all conic sections. Okay. Now, abhi tak humne kya kiya tha? We learned the sketching of graphs, typical, something like we had y equal to fx. We know how to sketch it. We just learn whether it's increasing, decreasing, whether it has a maxima or a minima, whether it has a point of inflection or not, and so on and so forth. We could trace. No, we could even trace curves that had a cusp or those that had vertical tangents even. Okay. Not just this, we have traced polar curves. We have traced parametric curves also. Okay, so these are certain standard curves that we have learned how to sketch. But when it comes to conic sections, since they are typical in nature, so they have a typical, you can say, procedure of learning how to sketch them. Because see, what even if you go back to your class 11, how do you define a parabola? I said define, not the equation. What is the definition of a parabola? कैसे define करते हो उसको? This is your class. Parabola is the set of all points in the plane that are equidistant. Equidistant कहाँ से? Set of Ma'am, points. एक minute. from a fixed line. If you go back to your NCERT books, did it say set of points? NCERT books में parabola. Locus. Hmm? Locus. Locus. What is a locus? Plane. No. What do you understand? अब locus किसका था define किया जो हमने? पूरी क्लास आई है. Locus का मतलब क्या होता है? Ma'am, points from locus. Locus का क्या मतलब हुआ? Ma'am, locus is any point which is equidistant from a fixed point. No. सारे points को join कर देंगे तो वो locus बनेगा. Yes, ma'am. A set of points. Locus is a set of points. कैसे? Yes, ma'am. कोई से भी? No, equidistant from focus or direct. I'm not talking of a parabola in general. I'm asking, what do you understand by locus? Ma'am, it's a point which moves in a plane. It's locus of a point की बात करते हैं ना? So that means it's a point. Yes, ma'am. Set of points satisfying equations, conditions, some conditions. Set of points that satisfy certain defined conditions. उसी को ही locus, उसी को वो, अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक point लिया, ठीक है? उस point को हम, say supposing I have any point P, ठीक है? ये move कर रहा है. कहाँ पे? Obviously हम XY plane में है, तो XY plane में ही move करेगा, ठीक है? बट अब मान लो ये मेरा पॉइंट है, तो ये किसी भी तरह से मूव कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, किसी भी तरह से मूव कर सकता है. बट मेरे को कोई भी रैंडम मूवमेंट नहीं चाहिए. आई एम नॉट स्टडिंग अ chaotic movement here, right? So what I do is I lay down certain conditions. ठीक है? सर्कल को कैसे डिफाइन करते हो? Equidistant from center. Equidistant सर्कल को हम डिफाइन करते हैं, it's a locus of a point which moves in a plane
such that it always remains at a fixed distance from a fixed point. यही कहते हैं ना. और जैसे हमने उस दिन भी डिफाइन करी थी, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी रस्सी का एक एंड है, ये हमारी रस्सी का दूसरा एंड है. उसके बाद हमने क्या करा, इस पॉइंट को मूव करना शुरू किया. कैसे कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हमने आर बोला हुआ था, ये नहीं बदलेगा. तभी हमने इसको भी फिक्स रखा, इसको भी फिक्स रखा, और उसके बाद इसको घुमा दिया, तो हमारे पास सर्कल बना. राइट. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस फिक्स्ड पॉइंट एज द सेंटर and this fixed distance is called as the radius. इसी तरह से अब जब हम लोकस की बात करते हैं, बेसिकली लोकस, अब एनसीईआरटी बुक्स में इसको लोकस बोलते हैं, बट इन प्लेन वर्ड्स इट्स अ सेट ऑफ पॉइंट्स. तो लोकस कहो या ना कहो, इट्स इमटेरियल नाउ. ओके, सो दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट एज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. अब पॉइंट्स कितने हो सकते हैं इन अ प्लेन? इनफाइनाइटली मेनी. Infinite. ठीक है Yes, ना, ma'am. बहुत सारे हो गए. अब उन सारे पॉइंट्स को हमने कलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे एक्स वाई आ गए हमारे पास. कैसे? सच दैट कि कोई It कंडीशन has something condition. सम कंडीशन नीड्स टू बी Yes, सेटिस्फाइड. ma'am. ठीक है. अब वो कंडीशन अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट कर्व आ जाएगा. ठीक है. अब जैसे पैराबोला के लिए तुम कह रहे हो, if I say, okay, let's talk of parabolas here, you are saying that it remains equidistant. ठीक है. कहां से? From From a fixed point. that's it. और कुछ नहीं. ये तो सर्कल बन गया फिर. अगर एक पॉइंट से मैम And फिक्स्ड a लाइन. fixed straight line. and a fixed straight line. ठीक है. अब इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हो? मैम फोकस. Focus. और इस फिक्स्ड लाइन, फोकस. डायरेक्ट्रिक्स. Fix. डायरेक्ट्रिक्स. दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स. यही होता है ना, यही ऐसे ही डिफाइन किया तुमने पैराबोला. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है. अब वो स्ट्रेट लाइन, ये कहीं नहीं बोला उसने कि वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है. इसका मतलब कोई भी हो सकती है. ठीक है. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. और हमारे पास, हमने यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट कर दी. ये हमने फिक्स पॉइंट ले लिया. अब एक पॉइंट लिया हमने P, सो दैट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है. ठीक है. उसके बाद इस पॉइंट को मूव करा, तो ये डिस्टेंस सेम है. ए पॉइंट यहां भी आ सकता है, सो दैट दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम. तो ये इसी तरह का कर्व देगा ना हमें, समथिंग लाइक दिस. एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट and from the fixed line, this distance is always equal. That's why we call this point as the vertex. यही बोला ना, ये हमारा फोकस हो गया, ये लाइन हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई. इसी तरह से पैराबोला डिफाइन करते हैं. ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, अब ये ऐसे भी हो सकता है. अब पैराबोला भी तो हमारे पास कई तरीके के हो सकते हैं. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है. कोई भी शेप हो सकती है ना. इट कैन ओपन ऑन द राइट, इट कैन ओपन ऑन द लेफ्ट, इट कैन ओपन अप, इट कैन ओपन डाउन. बिकॉज हमारी ये जो फिक्स लाइन है, ये यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है, और ये यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. ठीक है ना. सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, आई मीन कैसी इक्वेशन है, कहाँ है, दिस ऑब्वियसली अ लिटिल बिट यू नो, राइट. सो व्हाट वील डू नाउ इज, वील फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न हाउ टू, इसी तरह से हम एलिप्स भी डिफाइन करते हैं, हाइपरबोला भी डिफाइन करते हैं. सो विल कम टू देयर डेफिनेशंस व्हेन वी कम टू द स्केचिंग पार्ट ऑफ एलिप्स एंड अ हाइपरबोला. ओके. So, but then what we need to know is, given any equation, how do we, just sketch that parabola? अब तुम्हारा इसका मतलब पैराबोला की जनरल इक्वेशन हम क्या लेकर चलते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by. यही मानकर चलते हैं ना हम दो तरह की इक्वेशंस, राइट. यस मैम. डिपेंडिंग अपॉन, अकॉर्डिंगली तुम्हें पता है a और b क्या हो जाते हैं. ठीक है. बट से सपोजिंग तुम्हें इक्वेशन दी y स्क्वायर इक्वल टू 16x और x स्क्वायर इक्वल टू 9/4y. इसको ट्रेस करो.
ठीक है, हमें ये पता है कि शेप कैसा बनेगा, कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा, या इसको माइनस ले लो, कुछ भी ले लो। सो हमें ये भी पता है कि कहाँ क्या बनेगा, बट द पॉइंट इज, आई मीन देखो, एक ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है, ठीक है ना। तो कितना वाइड रखना है, कितना नैरो रखना है, डिपेंडिंग अपॉन दीज कॉन्स्टेंट्स वी नीड टू स्केच। तो वो सीखना है हमको, इजीएस्ट वे टू स्केच पैराबोलास। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी फॉलो, ठीक है। इनफैक्ट यू नो, इफ यू गो बैक टू योर क्लास 11 अगेन, यहाँ हमने फोकस की बात कर ली और ये सब, द लाइन on which this focus lies is called as the axis of symmetry. ये था एनसीईआरटी में कि नहीं था, ये बताओ जल्दी से, हाँ या ना? यस मैम, शायद। शायद। Yes, ma'am. Okay, the line on which focus lies, okay, this line is called as the axis of symmetry. So your axis of symmetry can be your horizontal line, again, in case your directrix is vertical. Otherwise, ulta ho jayega. In case your directrix is horizontal, then your axis of symmetry will be vertical. Vertical. Okay. So depending upon what kind of equation we are going to get, we are going to sketch a parabola now. Okay. So iske liye there are certain rules that we follow, and then you can remember them, and then we'll see how we sketch them. So sabse pehle, what we look for is the axis of symmetry. Okay. Now, in case your equation is y square equal to something, okay, then x-axis is the axis of symmetry. Okay. Similarly, in case your equation is x square equal to something, that means y-axis is the axis of symmetry. अभी हम जनरल जो बता रहे हैं, we are assuming that origin is the vertex for all such equations. बाकी के बाद में करेंगे, not that we won't do. Okay, so we have to first of all identify the axis of symmetry. So given an equation, we can identify which axis is the axis of symmetry. Once you have identified the axis of symmetry, the next thing we look for is which way does the parabola open? Left, right, up, down. That is the next thing we check. Okay, where is it going to open? Which direction is it going to open? This you know, that if x-axis is the axis of symmetry, I'm just writing the rules for you so that you remember it. Okay, if x-axis is the axis of symmetry and coefficient of x is positive, यही लेते हैं ना? X-axis is the axis of symmetry means your equation is y square equal to something. And if your coefficient of x is positive, that means parabola opens to the right. यही लिख देते हैं, okay? Nothing else. Is that okay? And if the coefficient of x is negative, right? So, and if the coefficient of x is negative, that means your parabola opens to the left. Is that right? Similarly, if y-axis is the axis of symmetry, then किसका कोफिशिएंट देखेंगे? Obviously y का, ठीक है? So if y-axis is the axis of symmetry and coefficient of y is positive, that means your parabola opens up. And if coefficient of y is negative, that means your parabola opens down. Is this clear? Okay. So far we have identified two things. Number one, what is the axis of symmetry? Number two, we have identified where it is going to open, left, right, up or down. Okay. Now we have to come to the crucial part.
to identify which way does it open. Okay. So what we do is we compare our given equation with these general equation. Oh, sorry, I'm sorry. This should be x. Y square equal to 4px and x square equal to 4py. ये हमारी general equations है of parabola. So whatever parabola we have to sketch, for example, I have to sketch say y square equal to 6x. ठीक है, supposing हमको ये sketch करना है, right? So what we do is we compare our equation with the general equation of this form, y square equal to 4px. Now, of course, it's y square, so x-axis is the axis of symmetry, and since the coefficient of x is positive, so my parabola is going to open on the right. That is obvious from here. Now, once we have this, then what we do is, when we compare our given equation with the given equation, we try to find what is going to be my p here. Okay, now when we sketch it, then we'll understand what this P stands for or what A is, which you already know. Okay, so what we do is we compare the general equation with the given equation. So basically from here, my 4P is same as 6, which gives me that my P is 3/2. यही आ गया ना? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. Now what we do is, if P is 3/2, 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1.5. ठीक है. And if P is 1.5, then my 2P is 3. हमें ये दो values चाहिए होंगी. कैसे? Then what we do is, we from the origin, because as I said, we are going to have only those parabolas whose vertex is the origin. Directrix obviously उसके पीछे ही जाएगा, right? So once I have identified this is my axis of symmetry, so focus is going to be somewhere on the positive direction of x-axis, and since this is the vertex, what we do is we look at a point which is distant p from the origin. ठीक है, अब p कितना है हमारा? 1.5, 3. So that means supposing somewhere here is 1.5. Okay, this point, this distance I take as P, right? Then what we do is, I just complete a box where I measure P units in the direction in which my parabola is going to open. Then what I do is, I measure 2P units up and down from this point P, which I have identified. So if P was 1.5, so 2P is going to be 3. So somewhere here, this distance is 2P units and 2P units below also. So what have I done is, I have constructed a box like this. ठीक है? Box कैसे बना? P units in the direction where the parabola is going to open. This is your focus now. Okay, so P units in the direction in which the parabola is going to open, 2P up and 2P units down. Okay, now once you have this, now this is your vertex. Now take these 2 points as your guiding points to trace your parabola. In the sense, the parabola should pass like this. So something like this. So this becomes your parabola. This equation is y square equal to 6x. Is this clear? You just have to compare your equation with the general equation. क्या है हमारे पास? Y square equal to 4px. Identify your P. Draw a box. कैसा? P units on the axis of symmetry and in the direction in which the parabola is going to open. 2P units up from that point and 2P units down from that point. See, if you remember your class 12 again, class 11 or 12, whatever, this is focus, and exactly P units from here will be your directrix. यही होता है ना? Yes, ma'am. The distance between focus and directrix is also 2P. यही होता है ना?
p units vertex तक and फिर p units from directrix. So this basically ये हमारा पूरा 2p, this becomes a square पूरा. So we make a box like this. Similarly, say supposing you have to plot now x square equal to, अब ये खुद try करो. This is the easiest way to sketch conics. You can't find an easier way. Try to sketch x square equal to minus 9y. Okay. Now, because we have x square, so that means the x's of symmetry in this case is which line? The y-axis, right? And because the coefficient of y is negative, that means your parabola is going to open down. Downward. ठीक है, तो एक तरह से हमारा negative y-axis is the axis of symmetry now because it is going to open down. So जैसे हमने पहले किया था, अब negative, अब ये minus का हमारे पास और कोई रोल नहीं है, right? Now what do we have to see? 9. ठीक है, इसको किससे कंपेयर करना है? 4p is 9. That means what? P is 9 by 4. Okay, so 9 by 4 approximately how many units? 2.2. 2.25. 2.25, right? And what will be 2p then? 9 by 2, which is 4.5. 4.5. ठीक है ना, ये हमारे ये दोनों डिस्टेंस, हमें यही डिस्टेंस चाहिए अल्टीमेटली, राइट? अब इसको स्केच करो. Can you sketch it? See, now this is your xy plane. ठीक है, अब हमें p units, see we have to move p units in the direction in which the parabola opens. So That is downward. So that because it is going to open down, so it has to be down. कितना? 2.25. So approximately यहाँ पे कहीं पे हो गया ये 2.5. So let us name it -1, -2, -3, -4. So somewhere here is your point. ठीक है ना, ये हमारा p unit हो गया, इसका मतलब ये focus हो गया, right? Then we have to move 2p units left and right now because इसके डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल अब हमें जाना है. ठीक है, 4.5 मतलब समवेयर हियर, ये 2p यूनिट हो जाएगा हमारा. समवेयर हियर, दिस इज गोइंग टू बी योर बॉक्स नाउ. सिमिलरली 2 3 4 5 1 2 3 4 समवेयर हियर. तो इस तरह का बन गया ना, ये बॉक्स बन गया हमारा. Is this okay? Now join it. Take these endpoints as the guiding points and just with a free hand construct your parabola. This is your parabola. X square equal to minus 9y. Is this okay? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. अब ये तो हुआ as far as the sketching part was concerned. ठीक है, अब एक मिनट. अब it could be your problem could be you are given some equation, okay, and you have to identify the equation of a parabola in the sense that, like for example, you have to find a parabola. I think this is some problem from the exercise, I don't remember which one. Your problem could be find a parabola whose vertex is 0 0 and focus is 3 0. ठीक है, अब हमें ट्रेस नहीं करना, हमें उस पैराबोला का इक्वेशन निकालना है.
ठीक है, अब वर्टेक्स 0 0, तो इसका मतलब अगर वर्टेक्स 0 0 है तो इसका मतलब पैराबोला कैसा बनेगा, या y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग या x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट? नाउ इट सेज फोकस इज 3 0. Now where does 3 0 lie? On the positive direction of x axis. ठीक है ना, अगर अगर हमारा ये पैराबोला है, 3 0 is a point somewhere here. This is the point 3 0. Right? So if focus is on the positive direction of x axis, that means my parabola opens right, because focus जहां पे है वहीं पे parabola open करेगा, ठीक है ना? If focus is 3 0, that means, and from vertex to focus, which distance was it? P. ठीक है ना, अभी हमने जैसे स्केच किया तो भी तो यही आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, my P is 3, and if my parabola opens right, that means my equation is going to be y square equal to 4px. Yes, ma'am. Right? And if I have identified my 3, that means, if I have identified my P as 3, that means my parabola is y square equal to 12x. ठीक है? Yes, ma'am. So whether you are given an equation and you are asked to sketch a parabola, or you are simply given the things, the details about the parabola, you can write down the equation also. Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, supposing, अच्छा ये तो हमें focus दिया हुआ था. Okay, say supposing you have to find a parabola whose vertex is 0 0 and directrix is the line y equal to 1 by 2. तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अब डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन y इक्वल टू 1 by 2 का मतलब क्या हुआ, इफ दीज आर माय कोऑर्डिनेट एक्सेस, so y equal to 1 by 2 is what kind of a line, horizontal or a vertical? Horizontal. Horizontal. So 1 by 2 is somewhere here, so that means this line is the line y equal to half, and if this is the directrix, this is the vertex, that means my parabola is going to open down. ठीक है ना, ये तो दिया ही हुआ है ना कि वर्टेक्स 0 0 है, तो डेफिनेटली वर्टेक्स के पीछे डायरेक्ट्रिक्स होगा ना, so definitely my parabola is going to open down now. So my equation will be x square equal to minus something into y. तभी तो होगा ना ऐसा. Now the distance from the vertex to the directrix is same as the distance from the vertex to the focus. ये भी P है, ये भी P है, अभी हमने देखा था. Yes, ma'am. This distance is half, that means your P is half. Yes, ma'am. So that means your parabola is going to be x square minus 4py, where P is half. So that means it's going to be x square equal to minus 2y. So this parabola is going to have vertex as 0 0 and directrix as y equal to half. Is this okay? Yes, ma'am. मैम See, हाँ जी बोलो. डायरेक्ट्रिक्स y by 2 था, तो मतलब p और y इक्वल होंगे. P is the distance from the vertex to the directrix. डिस्टेंस तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लोगे ना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो. भाई एक अपनी ये लाइन है y इक्वल टू हाफ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 0 हाफ, इस पॉइंट का. तो 0 से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ही होगा. so that means your p is half. तो सिर्फ इसी केस में y और p सेम है, मतलब बाय चांस सेम हो गया. नहीं नहीं, ये तो हमेशा होगा, जो भी डिस्टेंस होगा, इससे पहले भी तो किया था. सेम होगा.
जो फोकस लिया था, ये देखो ये वाला जो पॉइंट था इसमें फोकस दिया हुआ था. दिस वाज द डायरेक्ट. इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -3, क्योंकि पीछे जाना है ना. 3 यूनिट्स अगर हम इधर गए हैं तो यहाँ पे ही आएंगे ना. -3 0. ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x इक्वल टू -3. तो ये डिस्टेंस भी तो 3 यूनिट्स है. वो लेफ्ट में है ये या राइट में, दैट डिपेंड्स. अब जैसे अगर इसी में ही मैं कह दूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला whose vertex is 0 0 and directrix is y equal to -2. ये है. अब मैंने डायरेक्ट्रिक्स ले ली y इक्वल टू -2 और वर्टेक्स मेरा अभी भी 0 0 है. तो y इक्वल टू -2 कौन सी लाइन हुई, कहां से पास करेगी? वेयर विल दिस पैराबोला ओपन नाउ? Up. Up. Why? Because directrix is y equal to -2. तो अब y इक्वल टू -2 मतलब ये वाली हो गई. ये 0 -2 से पास करेगी हमारी लाइन. ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया. दिस इज द लाइन y इक्वल टू -2. तो ये डिस्टेंस कितने यूनिट्स हुआ? 2. तो इसका मतलब तुम्हारा p तो 2 ही हुआ ना अभी भी. दैट्स व्हाट आई सेड. ये नंबर, ये नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि कहां खुलेगा. अगर नेगेटिव है तो डिपेंड करता है कि कहां खुलेगा. x² इक्वल 8y होगा ना इसका? हाँ. नहीं, 8y क्यों होगा? हाँ हाँ. तो इफ दिस डिस्टेंस, तो इसका मतलब तुम्हारा फोकस कहां लाई करेगा? 0 2 पे. क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए ना. ये भी 2, इसका मतलब तुम्हारा p 2 हो गया. तो x² इक्वल टू 8y, ये पैराबोला बन जाएगा यहाँ पे. इट विल ओपन. ये वर्टेक्स था तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा पैराबोला बनेगा ना यहाँ पे. ये समथिंग लाइक दिस. इज दिस ओके नाउ? बोलो. मैम वर्टेक्स 0,0 है ना, हाँ. तो मैम वर्टेक्स 0 पे लाई करेगा. तो ये 0 ही, ये एक्स एक्सिस ही तो है. तो ये ओरिजिन ही तो हुआ. मैम आपने बीच में डिस्टेंस दी है ना. ये तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का डिस्टेंस. भाई डायरेक्ट्रिक्स तो पैराबोला के नीचे लाई करेगी ना. मैम ये पैराबोला में और एक्स एक्सिस के बीच में आपने डिस्टेंस दी थी ना, अरे वो बेटा बोल रहे हैं. वो गलती से ड्रॉ हो गया, सॉरी. जब वर्टेक्स 0 0 है तो डेफिनेटली इससे तो पास करेगा ना. ओरिजिन को तो टच करेगा ही. ये बनेगा ना पैराबोला तो. यस मैम. हाँ. सॉरी, वो जल्दी में बन गया. ठीक है. यस मैम. I mean, is the query answered or not? यस मैम एक मैम. -3 का भी एग्जाम्पल करके बता दीजिए ना. -3 मतलब? y इज इक्वल टू -3, वर्टेक्स इज 0 0. हाँ, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? -2 की जगह -3 ले लो. ये लो. वर्टेक्स इज 0 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स कौन सा लेना है? y इक्वल टू -3. यस मैम. तो ये रहा. y equal to -3. This is the x-axis. This is your y-axis. And directrix is y equal to -3 मतलब 1 2 3. This is the. इसको dotted भी बनाते हैं, ठीक है, so that there is no confusion. This is your directrix. Now, what is the distance between the vertex and the directrix? 3 units. Yes, ma'am. यस मैम. Right. So that means your P is 3. Yes, ma'am. And because your directrix is y equal to -3, your vertex is 0 0. That means your parabola is going to open up. Your Yes, ma'am. equation is going to be x² equal to something into y.
बिकॉज पी यूनिट जितना डिस्टेंस वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स का है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स और फोकस का होगा ना. Yes, ma'am. तो इसका मतलब आपका फोकस कौन सा पॉइंट हुआ? 0, 3. तो पैराबोला ma'am. is going to open up. Open up. Yes. So P is 3. So how much is 4P? See, equation कैसी होनी चाहिए हमारे पैराबोला की? X square equal to 4PY. So X square equal to 12Y. 12y. That is your parabola which is going to open up with vertex 0, 0 and directrix y equal to -3. Yes, ma'am. Is this okay now? Yes, ma'am. Abhi hum right now we are only doing all the conics with the origin as either the center or the vertex or whatever, right? When अब पैराबोला जरूरी थोड़ी यही हो भाई. मेरा पैराबोला ऐसा भी तो हो सकता है. If this is my xy plane, x dash, y dash, so I can have a parabola like this also. ये भी तो पैराबोला है. Yes, ma'am. I can have a parabola like this also. Oh, sorry. Something like this. I can have a parabola like this also. कहीं भी हो सकता है ना पैराबोला तो. Yes, ma'am. Right? So अभी हम इन पैराबोलास की बात नहीं कर रहे. करेंगे. We are not going to leave them. We'll do it. But उसमें हम क्या करते हैं? Normally क्या कर रहे हो? कुछ नहीं करना. शक्ल ही तो देखनी है तो शीशा टेढ़ा कर देते हैं. In the sense that एक्सिस को रोटेट कर देंगे. Yes. And then we'll get the same thing. चीजें ही तो बदलनी है. स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही रहेगा. बट कैसे? we'll do it later. I'm not doing those. First, let us learn how to sketch the standard conics first, and then we'll move over to rotation part also. Don't worry, we'll do it. Don't worry. Okay. Now, अभी कर सकते हैं आगे. टाइम है कि नहीं? The next thing is ellipse. Ellipse कैसे define करते हो? Locus of a point or set of all points. कैसे? Set of all points. Condition क्या होती है? Such that what happens? Ratio of distance from a fixed point and the straight line. Not exactly that. चलो इसको बाद Ma'am, में the sum of करेंगे. the two distances to the focal points is constant. How many foci are there in an ellipse? Ma'am, two. Two. And is there any condition on the distance between the two foci also? Yeah, that should be constant. That should be constant, number one. And what Fixed, about ma'am. the distance of the point from those two foci? It is fixed, ma'am. अच्छा ठीक है. चलो this I'll do tomorrow. कल है ना क्लास हमारा? No, ma'am. No, ma'am. कल नहीं है. ठीक है. फ्राइडे है ना. फ्राइडे करेंगे. In the meantime, from exercise 10.4, you just try the problems 3rd to 6th. ये सारे पैराबोला है. But I think 5th, 6th अभी नहीं होगा. 3rd and 4th अभी बस यही दो ट्राई करो. ठीक है. 5th, 6th अभी नहीं होंगे. Doesn't matter. कोई बात नहीं. 3rd, 4th मतलब 4 प्रॉब्लम्स हैं. 2 प्रॉब्लम्स नहीं है वो. 4 तरह के पैराबोलास है जिनको स्केच. Okay. ठीक है. ट्राई दोस. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16. 3rd, 4th, 15, 16 ये सारे पैराबोला से रिलेटेड है. ओके. 10.4 में से अब ये ट्राई करो फ्राइडे तक. देन वील डू मोर ऑन फ्राइडे. मैम ये क्वेश्चंस गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल हैं? नहीं, आई मीन इन व्हाट फॉर्म?
ग्रुप पे शेयर है बुक, ये बुक के बारे में शायद। या प्लीज शेयर।